Islamabad the Beautiful, a city with a population of over 2 million happy citizens. Islamabad is considered to be one of the most beautiful, well-managed and well-planned cities of the world. Under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Imran Khan and his keen interest in the well-being of the residents of Islamabad, the city administration is doing the best it can for the facilitation of the residents. To cater the needs and demands of the ever-expanding city of Islamabad, the Chairman CDA and Chief Commissioner of Islamabad, Mr. Amir Ali Ahmed, visited the President Islamabad Chamber of Commerce and Industries, Mr. Sardar Yasir Ilyas. Under the patronage of young and dynamic President of Islamabad Chamber of Commerce and Industries, Mr. Sardar Yasir Ilyas, the largely present business community presented their feedback on the projects initiated by CDA. The Islamabad Chamber of Commerce and Industry President, Mr. Yasir Ilyas, emphasized on the need for inclusion of Islamabad Chamber of Commerce and Industry President in CDA board, establishment of industrial estate for the business community of Islamabad, issues and problems faced by the residents with respect to property tax, problems faced by the developers in construction industry in forms of issuance of completion certificate, approval of building plans, bifurcation of plots, addition of more floors in already existing buildings. I think it was a great discussion where the business community was brought on board, and now we understand what they're doing and they understand what our concerns are to bridge that gap. So I think forums like these are essential and important ताकि जो हमारा gap है of understanding या acknowledgement जो हमें नहीं पता वो चीज़ें कर रहे हैं या उनको नहीं पता कि हमारे concerns क्या हैं, these sort of seminars help bridge that gap. तो I think ये एक बहुत अच्छा start है और इंशाल्लाह आगे इसको हम आगे लेके चलेंगे उनके साथ for the betterment of the capital, for the betterment of the country इंशाल्लाह because मुल्क है तो हमें. The President of Islamabad Chamber of Commerce and Industries stressed on the need of having Beautification Drive in the city. He assured his support to the Chairman CDA in his efforts on the cleanliness and uplift of the capital, specially focused on the main markets and markets of different sectors. Basic issues of the residents like availability of clean drinking water, availability of public toilets, parking in commercial areas, street lights, along with many other issues were highlighted. The Chief Commissioner of Islamabad and Chairman Capital Development Authority, Mr. Amir Ali Ahmed, thanked the President Islamabad Chamber of Commerce and Industries for inviting him over and sharing the deliberations and reservations of the business community of Islamabad. He shared his thoughts and expressed his openness for further dialogue and exchange of ideas between the two organizations. He briefed a large gathering of businessmen on the ongoing reformation of the civic authority. वन विंडो में सबसे ज़्यादा बेनिफिट बिजनेस कम्युनिटी को होगा, कमर्शियल जो एक्टिविटी हो रही है उन्हें होगा कि बजाय कि वो दफ्तरों के अपने काम छोड़ के दफ्तर आते रहें, वो अपने फ़ोन पे जो एप्लीकेशन है, बिजली पानी का कनेक्शन चाहिए उन्हें, प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना है, उसकी रिबेट है, जो भी चीज़ है वो वहीं बैठ के अपने एक ऐप के ज़रिए इंटरैक्ट कर सकते हैं, वो अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं कर रहे होंगे. He added that in this short time of only 3 weeks since he has assumed charge, change is visible and acknowledged by all. Automation of processes, facilitation for ease of doing business, online payment system for ease and convenience of speedy payment, introduction of mobile app for complaints and redressal of issues, beautification and provision of basic facilities are among many steps by CDA. आइडियल सिनारियो कभी नहीं होता, आपने गिवन सर्कमस्टेंस में काम करना है. इसीलिए हमने जो मैंने आज अनाउंस भी किया इस फोरम पे भी वो ये है कि जो हम लेट्स लाइट अप इस्लामाबाद कैंपेन शुरू करने लगे हैं और वो हम अपनी ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं कि आप कंप्लेन रजिस्टर करवाएं 72 आवर्स में. वी आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड रिलीफ एंड वी आर अकाउंटेबल फॉर दैट. और ये मैं किसी बेसिस पे कह रहा हूँ ऑन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आफ्टर स्पेंडिंग 20 डेज सीइंग कि दिस इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड इशू. सड़क के ऊपर रिपेयर करवा देना या लाइट को रिप्लेस करवा देना ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसके ऊपर हम कह नहीं जी 6 महीने चाहिए कम अज़ कम. जो खुशी हुई देखे हुए कि CDA is taking a very proactive stance ever since MCI and CDA is now merged, और जो MCI के रोल था वो वापस आ गया है CDA के पास. CDA is now working very actively. Street lights restore कर रहे हैं, वो landscape restore कर रहे हैं, carpeting of streets कर रहे हैं, वो हर जगह में different आपके जो sectors हैं जो suffer कर रहे हैं. उसके अलावा IG Principal Road पे वो काम कर रहे हैं. जो आपके neglected sectors थे जिसमें आपके I9 है, आपकी इंडस्ट्री के अलावा आपके E11, D12 देख लें, I14 देख लें, आपके मल्टीपल हैं, G9, G6. ये एरियाज़ वो एरियाज़ है जहाँ पे आपके पास रेजिडेंशियल भी और इंडस्ट्री भी है. एंड दे बीन सफरिंग फॉर नंबर ऑफ ईयर्स नाउ एंड अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आप देखेंगे कि दोबारा इन पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है. सो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड ऑल्सो आई थिंक इस फोरम पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि CDA हैज़ इंडोर्स्ड आवर प्लान्स, जिसमें 2 मेजर अपकमिंग प्लान्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह. एक तो हम कैपिटल का शॉपिंग फेस्टिवल करवा रहे हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स in collaboration with CDA, and also we're planning on doing a winter festival
Heads of both the organizations exchanged an MOU on the agreed agenda and stressed on further cooperation for the betterment of Islamabad the Beautiful.